हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टिकवुड। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम करेंगे एक विंटेज लैपटॉप का टीयर डाउन, जो कि है द ब्यूटीफुल iBook G3। अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी, एंड ये एप्पल ने रिलीज़ किया था 23 ईयर्स अगो, विच वॉज 1999। तो आज हम करेंगे इस ब्यूटीफुल स्टडी मशीन का टीयर डाउन। बट बिफोर ओपनिंग इट, लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर में मिल जाता है G3 प्रोसेसर विच इज़ पावर PC 750, जिसका क्लॉक स्पीड है 300 मेगाहर्ट्ज़, नॉट 3 गीगाहर्ट्ज़ बट 0.3 गीगाहर्ट्ज़। एंड टॉकिंग अबाउट द रैम, इसके अंदर में मिल जाता है 32 MB का रैम, नॉट 32 GB ऑफ रैम। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज, इसके अंदर में मिल जाता है मैसिव 6 GB का स्टोरेज, नॉट 6 TB बट 6 GB का स्टोरेज। एंड टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल डिस्प्ले, इट इज़ अ 12.1 inch TFT active matte display, matte finish, excellent, and with a resolution of 800 by 600. And talking about the build quality, I cannot express it because ये काफ़ी sturdy और बहुत ही beautiful है. So let's begin the teardown after 23 years. So here is the vintage iBook G3 और एप्पल ने इसे रिलीज किया था 5 डुअल टोन कलर्स में, और आज हमारे पास है ब्लूबेरी कलर, दैट इज स्टील और लाइट ब्लू कलर। ब्लूबेरी was one of the first introduced colors of iBook Clamshell laptops, which was introduced in June 1999 and was shipped in September 1999. So अभी हम सबसे पहले इसका डिजाइन चेक कर लेते हैं। नाइस मैट एंड ग्लॉसी फिनिश। इसके टॉप पर दिया है एक हैंडल फॉर इजी हैंडलिंग। दिस इज द बॉटम साइड विद एप्पल लोगो इन सेंटर। टॉकिंग अबाउट इट्स पोर्ट्स, on the left hand side we get 3.5mm headphone jack. Nothing has changed to this date when it comes to universal headphone jack, which is still used in 2023 models, which is awesome. यहाँ पर है USB पोर्ट और यहाँ पर है RJ45 Ethernet पोर्ट, and here is the RJ11 पोर्ट जो कि यूज होता था मॉडेम्स के लिए। और यहाँ बैक साइड पर है एक स्टर्डी हैंडल फॉर ग्रैबिंग द लैपटॉप लाइक अ सूटकेस। And this design is matching their most famous slogan, think different. And right hand side पर हमें मिल जाता है एक RCA jack which was used for charging, and यहाँ पर है CD drive जिसका bezel missing है। और यहाँ बॉटम पर है easily removable battery flap जिसे हम easily निकाल सकते हैं। Let's remove the battery. It's a lithium ion rechargeable battery which was user replaceable. अभी हम इसका कीबोर्ड निकाल लेते हैं। बहुत ही रगड़ बिल्ड क्वालिटी है। Literally I can feel the sturdiness. Still feels brand new. Trust me guys, the quality of Apple was and it's still unmatchable. No doubt, Apple still rules. Next है easily user replaceable RAM. Let's remove it and proceed with the teardown. ये है इसका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, एंड आई एम शॉक टू सी कि 23 साल बाद भी इसका हर एक पार्ट्स एकदम फ्रेश एंड ब्रांड न्यू है। नो कोरेशन, नो रस्टिंग। Literally it beats even today's build quality. Apple has really come a long way, and here is the display assembly with super smooth hinges. I'm really getting amazed with every part's build quality. This proves why Apple was and is still number one. They have really put everything into it. I can feel every bit of their hard work in here. Hats off to Steve Jobs and his team. And here is the 2.5 inch ID hard drive which is having the PATA connector. If many people doesn't know, जैसे कि हमें डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव आज भी SATA में आती है, जिसका फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, दैट इज SATA. बट बिफोर दिस टेक्नोलॉजी ऑफ SATA इट वाज पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसे PATA कहते थे. सो दिस इज नॉट SATA बट PATA हार्ड ड्राइव, ऑल्सो कॉल्ड ID ड्राइव. रियली मिसिंग दोस गोल्डन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक. व्हाट एन एवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी. एंड फाइनली हियर इज द मदरबोर्ड, जिसे एप्पल में MLB, दैट इज मेन लॉजिक बोर्ड कहते हैं. Amazing build quality and such a neat and clean component placement. Even today in 2023, I have seen many brands laptop with disaster design when it comes to motherboard and components placement. So again, I'm impressed by Apple. And the way the motherboard soldering material is letting feels so brand new, like it was manufactured now in 2023 but not in 1999. And like I've said earlier, no rust, no corrosion, no damages. Just couple of words to describe this. It's Apple. सो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा टीयरडाउन वीडियो ऑफ द विंटेज iBook G3 का टीयरडाउन पसंद आया होगा. बट जैसे कि आपने चेक किया, इसका बिल्ड क्वालिटी वॉज एक्सेलेंट. इट वॉज वेरी स्टर्डी इन फ्रॉम इनसाइड, एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट वॉज स्टिल इन इंटैक्ट विथ एक्सेलेंट कंडीशन. बट अभी इससे रीअसेंबल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. बट एनीवेज विल ट्राई टू रीअसेंबल दिस विथ एक्सपर्टी. बहुत जल्द मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.